श्री पंचमुखी हनुमत कवचम विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान् इति शक्तिः। हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिंहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सरवारिवीरापहम्। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं तं थं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखी आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचम महान्तं कवचम पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं
पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् अथ श्री प्रदोष स्तोत्रम् जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वेकवन्देश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्रविरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधु जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभु प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहे प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर दरिद्रः प्रार्थयेद्देव प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्योऽथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शंकर शत्रवः संशयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजां ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा श्रीप्रदोष पूजा महिमवर्णनम् ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यैः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने
को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलयः प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं
तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारनियमां चारः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिंहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सरवारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ॐ ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा गं खं गं घं गं चं छं जं झं यं तं थं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखी आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय
कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचम महांतं कवचम पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् अथ श्री प्रदोष स्तोत्रम् जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वेकवंदेश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधु जय भक्तार्ति भंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभु प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहे प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर दरिद्रः प्रार्थयेद्देव प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्योऽथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यम् कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शंकर शत्रवः संशयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजां ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीप्रदोषपूजा महिमवर्णनम् ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा
भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर्बिल्वाद्यैः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले कः प्राणीगणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायङ्कालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान् मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम् तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलये प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम् तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहित्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मरन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम तस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्य मां रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया
रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनम् सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरैः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्यसमं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारणनियमाचारैः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिंहलम् खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सरवारिवीरापहम् श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ॐ ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः
ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठम 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखी आदिवराहाय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राणरक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचम महांतं कवचम पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनम् त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री प्रदोष स्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वेकवंदेश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्रविरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधु जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहे प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर दरिद्रः प्रार्थयेद्देव प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यम् कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शंकर शत्रवः संशयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे
जनः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजां ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीप्रदोषपूजा महिमवर्णनम्। ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि। वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा। देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यैः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः। तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले। कः प्राणी गणनाथनाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान्। मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम् यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम्। तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना ब्रह्माण्डप्रलये प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे। ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः तत्तातः सुकृती सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः तत्सन्तान समृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम्। तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामैर्मुहुः। नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्कर स्मरहर त्राहित्यमन्दोत्सव। सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलैरमन्दविलसद्गन्धैर्मरन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः। सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे
यः सायमीशार्चनम् ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनम् व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्मम मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमाम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनम् सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायंकालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोके शाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणस्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायंकाल शिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारणनियमाचारैः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिंहलम् खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सरवारिवीरापहम् श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा
ओम हरिमर्कटमर्कटाय फम 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 फट स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं झं यं तं थं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखी आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राणरक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचम महांतं कवचम पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेव वशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थ सिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचम स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री प्रदोष स्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वेकवंदेश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधु जय भक्तार्ति भंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभु प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च
महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहे प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर। दरिद्रः प्रार्थयेद्देव प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्योऽथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम्। दीर्घमायुः सदारोग्यम् कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर। शत्रवः संशयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनः सन्तु निरापदः। दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः। एवमाराधयेद्देवं पूजां ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत्। सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीप्रदोषपूजा महिमवर्णनम्। ब्रह्मा शिवार्चन विधिं विधिभिर्विदित्वा भक्त्या प्रदोष समये शिवपूजनेन पूज्यो भवत्यनुदिनं प्रणवान्ति तानि पञ्चाक्षराणि शिवनाम मनोहराणि। वाणी च वाग्भिरमिताभिरभङ्गुरार्थे प्रस्तौति शङ्करपदाम्बुजपूजनं च कृत्वा प्रदोषसमये स्वमराङ्गनाभिः साकं प्रनृत्यति विभूतिपवित्रगात्रा। देवास्तावदुमासहाय चरणाम्भोजं प्रदोषे मुहुर् बिल्वाद्यैः कुसुमैश्च चन्दनवरैः सम्पूज्य जातोत्सवाः। तत्पूजा विरतः कदापि न भवन्ति वामृतास्वादने। को वा स्याद्विरतः प्रमोदविरतः को वा जगन्मण्डले। कः प्राणी गणनाथ नाथ चरणाम्भोजार्चनानादरः सायंकालमवाप्य दुर्लभतरं ब्राह्मण्यमासाद्य च। त्यक्त्वा केवलमन्त्यजानपि महापापाश्रयान् दुर्मुखान् दुर्वीर्यान् दुरदृष्टकोटिघटितान् जारोपजारोद्भवान्। मन्येमुं पुरुषाधमं नरखरं दुर्वीर्यपातोद्भवम् पापिष्ठातिवरिष्ठमयपकुलस्त्रीयोनिगन्धोन्मुखम्। यः सायं शिवलिङ्गसङ्गरहितः कार्यान्तरव्यापृतः शृङ्गाराधनसाधनादिविमुखो भूभाररूपः परम्। तद्वंशः प्रलयं प्रयाति सहसा तन्नाशकैस्तैर्विना। ब्रह्माण्डप्रलये प्रदोषसमये यः शङ्करानर्चकः तच्चित्तं खलु पित्तपीतमनिशं तातोऽपि तस्याधमः। तन्माता व्यभिचारिणी सुनकजा जातापि सारासभे। ब्रह्माण्डानि पुनाति शङ्करपरः सायं शिवाराधकः। तत्तातः सुकृते सती च जननी तत्सोदरो ब्राह्मणः। तत्सन्तानसमृद्धिरप्यनुदिनं तस्याभिवृद्धिः सदा। सन्तोषैर्धनधान्यदारविभवा द्यभ्युच्चयः सन्ततम्। तत्पादाब्जरजः परं शिरसि मे तस्मै नमः सर्वदा।
यः सायं शिवलिङ्गपूजनतः श्रान्तः प्रणामेर्मुहुः नृत्योत्साहकरः कराद्यभिनयः अत्यादरादादर व्याहरेर्हरशङ्करस्मरहर त्राहीत्यमन्दोत्सव सङ्गस्तेन ममास्तु सन्ततमुमाकान्तं प्रदोषेषु यः क्षीराद्यैरभिषिच्य लिङ्गविलयं श्रीचन्दनालेपनेः बिल्वैरप्यमलेरमन्दविलसद्गन्धैर्मनन्दान्वितेः कुन्दैरर्चयति प्रकृष्टविभवैः कर्पूरदीपादिभिः सत्सङ्गे दिनयापनं भवतु मे यः सायमीशार्चनं ध्यात्वानन्दघनो विभूतिकवचो रुद्राक्षभूषोत्सवः जिह्वा शङ्करनामरूपसुसुधा पुरादरास्वादनं व्यासक्ता शिवलिङ्गपूजनमहोत् साहस्य सायं मुहुः वासः शान्ममतस्य मन्दिरवरे यः सायमीशार्चना नन्दापारतरङ्गसङ्गततनुर्भूतिप्रभाभूषितः रुद्राक्षाभरणः प्रतिक्षणमपि श्रीमन्विरूपाक्ष्यमाम् रक्ष्यं प्रेक्ष्य परीक्ष्य मामकधिया रक्षेति यः संवसेत् पातालेऽप्युरगेश्वर प्रभृतयः श्रीहाटकेशार्चनं सायं सन्ततमेव शान्तहृदयाः सायं वधू संयुताः धूपैर्दीपगणैश्च चन्दनवरेः पुष्पैरमन्दैरपि प्राज्याज्यान्नवरैरपारमधुरैर्नाट्यादिभिश्चान्वहम् सायङ्कालशिवार्चनस्य महिमा केनापि न ज्ञायते तस्मादेव विमोहमेत्य बहवः त्यक्त्वा शिवाराधनम् कुम्भीपाकमुपेत्य गर्भजनितं क्लेशं च सम्प्राप्यते संसारार्णवमञ्जनेरनुदिनं तिष्ठन्ति बम्बारवेः लोकेशाङ्करसङ्गतिः खलु सदा सायं शिवाराधना ध्यानाय प्रभवत्यवश्यमसकृत तत्सङ्गतेस्तत्फलम् सायस्यास्ति स एव भाग्यनिवहा धारः सुराराधितः तत्पादाम्बुजपूजनेन भगवान् भालेक्षणास्तुष्यति आकल्पं यदि धर्मकोटिभिरहोरात्रं च यो नीयताम् किं तैः सायमुमा सहाय चरणाम्भोजार्चनं चेद्भवेत् पातिव्रत्य समं खलु व्रतमिदं त्यागेष्य किं दुर्भगो न स्यादेव ततः कदापि न परित्याज्यं शिवाराधनम् सायङ्कालशिवार्चनेन भगवान् तुष्टो यथा शङ्करः तदवन्नान्यविशेषकारणनियमाचारैः स तुष्यत्यपि तस्मात् सायमुमा सहाय भजनं कृत्वा विमुक्तो भवेत् पापापारमहाम्बुराशिभिरपि प्राप्नोति भाग्यान्यपि।